Once again, I welcome you all in my new video, and in this video, we are going to talk about the respiration. Okay, before I start today's class, I would like to recall the previous uh, taught life processes. Okay, of class 10th, that are nutrition, circulatory system, digestive system, and nutrition in higher plants by the process photosynthesis. So in this in that sequence, today's topic is the respiration. So let's study first the what is the definition. Respiration is a chemical process of releasing energy by breaking down glucose for carrying out life processes. Okay, if there is no energy in human body, or we can say any living organism, so that organism cannot perform any life processes. For example, digestion, circulatory system, excretory system. Okay, so the main element is the energy, and that is liberated by the process respiration, and the next point, students, respiration includes both physical process, that is breathing, and biochemical process, okay, that is cellular respiration, or we can say internal respiration. Means respiration consists two things, breathing and cellular respiration. Okay, so breathing consists definition of breathing is process of inhalation and exhalation of air is called breathing. मीन्स सांस मतलब एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर छोड़ना, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इज कॉल्ड respiration. Students, I am just showing you all a diagram. I will be teaching human respiratory system in the next video, but today is the introductory part of the syllabus, so I am just going through this diagram. This is human beings, and this all highlighted part is the making human respiratory system. See, air is inhaled by human beings through nostril, we can say, especially in the but in some cases by the mouth also, and these all air go to the lungs through the trachea. This is breathing, and after sometimes only 3 to 4 seconds, the all, not all, 500 ml, okay, 500 ml per breathing is given outside, or we can say released outside, and this together is known as breathing. में सांस लेना और सांस छोड़ने क्या बोलते हैं, breathing. And one more thing, students, that human breathing rate is 15 to 17 times per minute. 15 to 17 times per minute. So next point is the going back on this topic. So breathing process of inhalation and exhalation of air is called breathing. Okay, students, and here cellular respiration takes place into the cells. Of course, it takes place only into the cells. So that is why it is not cellular, means related with cell, a kind of respiration which takes place into the cell. Okay, so it is named as cellular respiration. The process of breakdown of simple food, that is glucose. We eat the chapati and it is digested in our body, and we get in the last we get the glucose in our alimentary canal. खाना खाते हैं, उसमें स्टार्च होता है, और स्टार्च क्या होता है बच्चों, डाइजेशन, और ग्लूकोज रिलीज होता है एलिमेंट्री कैनाल में. वही ग्लूकोज कहाँ जाता है, सेल के पास, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. We have discussed already in the last videos. Okay, continuing the topic, into CO2 of simple food, that is glucose. It could be fructose also, it could be galactose also, but mostly 90% cases are related with glucose.
into CO2 and H2O in the presence of O2 is called cellular respiration. It's called cellular respiration. Next is the, it is a physical process, means you need to do to involve, let the involve physical your organs, body organs we can say. Okay, for example, lungs is there, diaphragm is there, muscle of ribs is there. Okay, so these are involvement, these involvement are of at the point of physical involvement, sorry physical involvement. Okay, physical आपके जो organs हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बट इन अदर केस इट इज ए केमिकल प्रोसेस. दैट मीन्स in this process enzymes are involved, there are many enzymes are involved. Okay, and also we can say that respiratory pigment, hemoglobin, respiratory pigment, hemoglobin, it is also involved. Okay, next is the energy required. Energy is required means without energy you can't do the exercise, any physical process. That is why I have written energy is required. Energy is liberated, yes, near about 36 ATP. Okay, and some cases 38 ATP are released. Okay, and that is later on used by the body to perform all the life processes of the organism. ओके, और वी कैन से आर बॉडी, ये एनर्जी तो हमारी बॉडी में यूज होती है बच्चों. नेक्स्ट इज O2 इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस. O2 इज नॉट रिक्वायर्ड. अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे हैं ब्रीदिंग इन वो ब्रीदिंग आउट, यही होती है ब्रीदिंग. ठीक है, सांस लेना, इनहेल एंड एक्सहेल, यही होती है ब्रीदिंग. और O2 उसमें तो है ही है बच्चों. वो तो O2 आपके लंग्स में चली गई, वो यूटिलाइज थोड़ा ना हुई. O2 तो यूज होगी यहाँ पे, और यहाँ से जो एटीपी होगी वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होगी. वंस अगेन, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, मान लो आप ब्रीद इन किए, दैट O2 इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड बाय दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज लिबरेटेड, एंड दैट एटीपी लेटर ऑन यूज्ड बाय द मसल ऑफ द रिब्स, मसल ऑफ द डायफ्राम. ओके, to increase and to decrease the volume of the thoracic cavity. thoracic cavity जो है उसकी वॉल्यूम घटाने बढ़ाने में यूज होती है. ठीक है, that is why it is written O2 is not required. Next is the takes place in higher organisms. takes place in higher organisms means ये जो higher organisms जैसे हम लोग हैं, काव है, बफलो हैं, we can say मंकी है, गोट है. ओके, नेक्स्ट इज द टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये कहाँ पे होती है? सभी, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, इंक्लूडिंग यूग्लिना, सब में होती है ये. ठीक है, सम एक्सेप्शंस आर स्टिल देयर, बट 99.99% में क्या होती है? ये प्रोसेस होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द, there are students some examples of animals with their respiratory organ. First is the insect having spiracles as a respiratory organs. So actually if you see the cockroach, there are some small opening at the lower surface of their body. These holes are known as spiracles, और इन्हीं के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, हाई टू लो, लो टू, सॉरी हाई टू लो, इधर जो होगा हाई टू लो. ओके, फिश में गिल्स होते हैं. ओके, उनके अपर पुलम जो होते हैं ना, सामने एक पर्सन वहां पे होते हैं. नेक्स्ट इज द फ्रॉग. नेक्स्ट इज द फ्रॉग. फ्रॉग इज वेरी स्पेशल एनिमल, स्पेशल क्रीचर. पीपल ऑफ चाइना लाइक दीज एनिमल्स बिकॉज ऑफ देयर लेग. ओके, बट it is a special creature having capability to respire, you can say to do breathing in all, we can say, atmosphere. Okay, whether it is water, whether it is land, whether it is
we can say both. Okay, water also, land also, at the both places. Okay, so through general body surface in water it does the respiration. By lungs on land, जब लैंड पे आते हैं तो किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं. हम लोग भी तो इसी से करते हैं. और ऐसे रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच लंग्स आर इन्वॉल्व्ड. ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी. क्या बोलते हैं बच्चों? पल्मोनरी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? बाय गिल्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज आस्क्ड इन मेनी examinations of medical. Okay, so in tadpole is the larval stage of the frog having tails. tadpole में क्या होती है? टेल होती है. बचपन में in the childhood those who have gone to village, छोटे छोटे गड्ढों में होती, देखा होगा आप लोगों ने. हम लोग बहुत खुश होते हैं, यार ये तो फिश है. पता चलता है पापा से कि अरे फिश नहीं है, ये तो फ्रॉग है. ठीक है बच्चों. सो बाय गिल्स में कैसे होता है? बाय गिल्स इनटू द टैडपोल, दैट इज द लार्वल स्टेज ऑफ द फ्रॉग. और फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ऑर्गन इज द लंग्स. तो इसमें किससे होता है? किसमें होगा? वर्टिब्रेट्स, मतलब जो इसमें बैकबोन होती है, या वी कैन से हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. पता चला पूछ दे ह्यूमन तो कंफ्यूज हो. So I have written human also. So students, that is all, and we will discuss this written topic in the next video. So, and one more thing, students of my own school, just make a note of it. Okay, very soon I am going to call you all. Okay, and I will be asking some question to you all. Okay, regarding the topics. Okay, so get ready. So students, thanks for watching. Bye bye, take care.